Hello students, welcome to EduCraft Academy. In today's class, we'll study about fertilization. What is fertilization? Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete. Fusion of male gamete and female gamete. Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete. Pollination is followed by fertilization. We were studying about pollination. What is pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma. The transfer of pollen grains from anther to stigma. Anther में क्या है? Pollen grains. और pollen grains contain male gamete. Stigma, it has female gametes. सबसे पहले क्या हो रहा है? पोलिनेशन. पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा, राइट. पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. पोलन ग्रेन्स में है मेल गैमेट्स, स्टिग्मा में है फीमेल गैमेट्स. यानी पोलिनेशन के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. समझ रहे हो ना? पहले होगा पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन. दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. See, fertilization is the fusion of the nuclei. क्या है वो? Fusion of the nuclei of two dissimilar sexual reproductive units. Dissimilar because one is male and other is female. Dissimilar sexual reproductive units called the male gamete and female gamete. Fertilization results in the formation of zygote. This male gamete and female gamete fuse and form zygote. Fuse and form zygote. Zygote is also called as oospore. I think you understood what is fertilization. अब हम देखते हैं structure of pollen grain and structure of ovule. Male reproductive unit, that is pollen grain की structure, and female reproductive unit ovule का structure. Pollen grain is a microscopic unicellular structure. It is unicellular structure. It is covered by two layered wall, the inner thin intine and outer thin exine. Intine and exine. See, this is pollen grain. This is a mature pollen grain. See, this is inner layer, this is outer layer, inner layer, outer layer, inner layer, intine, outer layer, exine, inner layer, intine, outer layer, exine. Then at certain places, exine has pores called germ pore. See, this is exine outer layer, but at some places germ pore is present, right? Some layer, see, this is a pore, this is pore, this is a pore, right? This is a pore. So these pores are called germ pore. They are present in exine. At certain places, exine has pores and they are called germ pore. And it contains two nucleus. See, it has two nucleus. Two nuclei is present. One is generative nucleus and second is tube nucleus. One is generative nucleus and second one is tube nucleus. Okay? So it has two nucleus. Generative nucleus एंड ट्यूब न्यूक्लियस. ओके, तो यहाँ पे याद करने वाली पांच चीज़ें हैं जो आपको यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. कौन सी पांच चीज़ें? इनर लेयर इंटाइन, आउटर लेयर एक्साइन. एक्साइन हैज सम पोर्स, दे आर कॉल्ड जर्म पोर. एंड दिस पोलन ग्रेन, इट हैज टू न्यूक्लियस. वन इज द ट्यूब न्यूक्लियस, सेकेंड इज जनरेटिव न्यूक्लियस. ओके, अब देखो, ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर ये स्ट्रक्चर में देखो, ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट, लेकिन ये क्या है? तो देखो, पोलिनेशन होगा. पोलिनेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन विल रीच द स्टिग्मा. पोलन ग्रेन विल रीच द स्टिग्मा. तो जब स्टिग्मा पर जाएंगे पोलन ग्रेन्स, दे विल रीच द स्टिग्मा. तो क्या होगा? ये जो जर्म पोर है, ये सी, inner layer is intine, outer layer is exine, and these pores are germ pore.
तो ये जो इंटाइन है, it will come out of this germ pore and form a tube. See, now this pollen grain, it has reached the stigma, and after reaching the stigma, it will absorb water and sugar and it will get swell up, and after it gets swell up, from one of the germ pore, the intine it comes out. From one of the germ pore, intine comes out and form a tube, and this tube is called pollen tube. What is this tube called? Pollen tube. And what is the function of this pollen tube? It helps the male gametes to reach the ovary. It helps the male gametes to reach the ovary. Understood this structure of pollen tube? Okay. See, after the pollen grains are deposited on stigma, pollen grains will reach stigma, that is pollination. Pollen grains will absorb water and sugar. They will absorb water and sugar and they will swell up. Then from one of the germ pore, this is germ pore, the intine it will come out and form a fine tube. Can you see this fine tube? And this tube is called pollen tube. Understood how pollen tube is formed? See, pollen grains, so tube formed is pollen tube. Now this tube produces enzymes at the tip as it dissolves the tissue of style as it grows. Eventually it travels down the whole length of style into the ovary. देखो ये ट्यूब ग्रो कहाँ पर हो रहा है? स्टिग्मा पर. सी दिस इज स्टिग्मा and these are pollen grains, right? So this is pollen tube, but ये तो gynoecium है, right? This is gynoecium, this is stigma, this is style, this is ovary. So it has to dissolve the style, right? This pollen tube, it has to dissolve the style. How it will dissolve the tissues of the style? It produces enzyme. This pollen tube, it produces enzyme and then it dissolves the tissues and eventually it travels down inside the ovary. It travels down inside the ovary. Got the concept of pollen tube? Okay. Now we will see the structure of ovule. See, structure of ovule. Ovule, it is a small structure contained in ovary. See, stigma, style and ovary, and inside this ovary, ovule is present. See, this whole structure is ovary, but inside this ovary, this is ovule. Each ovule is attached to the placenta by a stalk called funicle. See, this is funicle. By this funicle, it is attached to ovary. Can you see? This is ovule, and this ovule is attached to ovary by funicle. So this is funicle. It is attached to ovary by funicle. Okay. What is the function of funicle? देखो इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट है. इंटाइन, एक्साइन, पोलन ट्यूब, सब कुछ एग्जाम में आता है. तो सब के स्ट्रक्चर एक अपनी शॉर्ट नोट्स बना लेना और सबके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं उसमें. ठीक है. तो फ्यूनिकल, व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल? इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट टू फ्यूनिकल. Ovule is attached to placenta by funicle, and funicle, it provides nourishment. First function is attachment, second function is nourishment to the ovule. After this, ovule is surrounded by two protective coats called integuments. Ovule के साथ दो protective coats हैं, they are इंटेग्यूमेंट्स, और उनके बीच में एक स्मॉल ओपनिंग है. दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. गॉट इट? इंटेग्यूमेंट्स यानी प्रोटेक्टिव कोट्स एंड स्मॉल ओपनिंग, दैट इज माइक्रोपाइल. सी, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिव कोट, one protective coat, two protective coat, right? And can you see this opening? This opening is called micropyle. Okay, funicle, attachment, nourishment, then two protective coats, integument, then micropyle. अब याद करो, pollen tube. They write this is pollen tube. How will this pollen tube enter the ovary? Pollen tube enters the ovary through this micropyle. यानी pollen, जो pollen tube
जो पोलन ट्यूब है वो कैसे एंटर करेगा? थ्रू दिस माइक्रोपाइल. पोलन ट्यूब इट एंटर्स द ओवरी थ्रू दिस माइक्रोपाइल. ओके, चलो, और पोलन ट्यूब यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. जस्ट अ मिनट. पोलन ट्यूब यहाँ स्टॉप हो जाएगा एंड इट विल रिलीज द मेल गैमेट्स inside the embryo sac. Okay, see, pollen tube will dissolve here and it will release the male gametes inside the ovary sac, inside the embryo sac. Within the ovule there is a structure called embryo sac. Embryo sac is present. ठीक है, embryo sac में क्या है? very very important, ध्यान से सुनना. Within the ovule there is a structure called embryo sac. Embryo sac, it contains an egg or female gamete. Embryo sac contains egg and two polar nuclei which form secondary nucleus in the center. Embryo sac it has egg and two polar nuclei. It has egg and two polar nuclei. दो चीज़ है, egg and two polar nuclei. Polar nuclei are called secondary nucleus. Okay, it also contains synergids and 3 antipodal sac. Secondary nucleus also contains 2 synergids and 3 antipodal sac. The embryo sac is surrounded by a nutritive tissue called nucleus. See, this is the embryo sac. Can you see this? This is embryo sac. It is surrounded by a protective tissue, by a nutritive tissue that is called nucellus. And see, these are टू पोलर न्यूक्लियाई. दिख रहे हैं आपको ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्लियाई. ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. दीज टू पोलर न्यूक्लियाई दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. एंड देन दिस इज एग. सी, दिस इज एग. देन दीज आर सिनर्जिड्स. कैन यू सी दिस? सिनर्जिड्स एंड एग. एंड दिस इज एम्ब्रियो सैक. What it contains? It contains egg. It contains egg. This egg is female gamete. It contains two polar nuclei. They are called secondary nucleus. It contains synergids. It contains antipodal sac. And this embryo sac, it is surrounded by nucellus, which is nutritive. Okay, which performs the function of nutrition. Got it? Got the structure of? This is structure of ovule. Okay, and pollen tube. This is pollen tube. Pollen tube enters the ovary through this micropyle and then यहाँ पे male gametes होंगे. It will release the male gametes inside the embryo sac and here fertilization will take place. Fertilization is fusion of male gametes. These are male gametes and these are female gametes. This egg, it is female gametes. So fusion of male gamete and female gamete will take place here. Okay. Now we'll see fertilization. Process of fertilization. Okay. यानी पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट समझ में आ गया, ओव्यूल दैट इज फीमेल गैमेट समझ में आ गया. अब देखो पोलन ट्यूब आप समझ में आ गया कि पोलन ट्यूब किस तरीके से फॉर्म हुआ है. ठीक है, चलो. इन द मीन टाइम इनसाइड द पोलन ट्यूब द जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स. ओके, दिस जनरेटिव न्यूक्लियस इट डिवाइड्स एंड फॉर्म टू मेल गैमेट्स. Two male gametes are formed. The pollen tube carrying the two male gametes enters the embryo sac through the micropyle. Pollen tube, it carries two male gametes. It will enter through this micropyle and its tip dissolve. Its tip will get dissolved and this male gamete, they will enter the embryo sac where this egg, that is female gamete, is present. The two male gametes are liberated inside the embryo sac. One male gamete, it will fuse with the egg to form zygote. See, देखो दो है ना, दो, तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा. one male gamete will fuse with this egg and it will form zygote. This zygote, it will grows into embryo new plant. Okay, one male gamete will fuse with the egg and form zygote. दूसरे वाले का क्या होगा? जो दूसरा अदर मेल गैमेट है, it will fuse with the secondary nucleus to form endosperm. See, this is second male gamete. It will fuse with this second male gamete. It will fuse with this secondary nucleus and it will form endosperm.
Can you see that two fertilization are taking place? Two fertilization, दो fertilization हो रहे हैं. Therefore, this is called double fertilization. Double fertilization. Got it? What is double fertilization? See, pollen tube contains two male gametes. Pollen tube contains two male gametes. One male gamete fuse with the egg. One male gamete fuse with the egg to form zygote, and this zygote will develop into an embryo. And the second male gamete, it fuse with this polar nuclei, that is secondary nucleus. Second male gamete, it fuse with the two polar nuclei, that is secondary nucleus, and it forms the endosperm. It forms the endosperm. What is fertilization? Fusion of male gamete and female gamete. So as two fertilizations are taking place, so this is called double fertilization. This is called double fertilization. आपको समझ में आ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. इसमें एक और चीज आती है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. सी, this is one male gamete, this is secondary nucleus, but it has two polar nuclei, right? Two polar nuclei, that means 1 2 3. Three nuclei are getting fused, right? As three nuclei are getting fused, therefore this is called triple fusion. One male gamete and two polar nuclei, they are getting fused. As three nuclei are getting fused, so this is called triple fusion. ठीक है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे अच्छे से समझ लेना, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लेना. वैसे सब कुछ समझाया हुआ ही है, ठीक है, और मैंने भी काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है कि आपको सब समझ आए. फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आने वाला ही है, ठीक है. चलो, what is function of endosperm? Endosperm provides nourishment to growing embryo. Endosperm provides nourishment to growing embryo. Okay. What is fertilization? See, fertilize यहाँ पर सबसे important है fertilization, double fertilization and triple fusion. ये तीन चीज़ें बहुत important है. The fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. And here two fertilizations are taking place. One between male gamete and female gamete, and other between male gamete and secondary nucleus. Two fertilization, therefore it is called double fertilization. Then triple fusion, the fusion of one male gamete with the secondary nucleus, which is formed by fusion of two polar nuclei, is termed as triple fusion. Can you see three things here? One male gamete and two polar nuclei. Three things are involved, therefore it is called triple fusion. Triple means three. Okay. Now post fertilization changes. Post fertilization changes हम इस चार्ट से पढ़ेंगे. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया. फर्टिलाइजेशन फर्स्ट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये वही है. देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो अब क्या चेंजेस हो रहे हैं? जो ओवरी वॉल है, सी, जो ओवरी वॉल है वो क्या फॉर्म हो जाएगी? ओवरी वॉल, इट विल फॉर्म द फ्रूट वॉल. जो ओवरी है, सी, ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो ओव्यूल है इट विल फॉर्म द सीड. ओव्यूल, इट विल फॉर्म द सीड. ओवरी, इट विल फॉर्म द फ्रूट. एंड ओवरी वॉल, ओवरी की जो वॉल है इट विल फॉर्म द फ्रूट वॉल. ओव्यूल विल फॉर्म द सीड, ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट, एंड ओवरी वॉल विल फॉर्म द फ्रूट वॉल.
देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होना है, सीड्स फॉर्म होना है, सीड फॉर्म हो जाएंगे और फिर सीड जर्मिनेट होंगे, सीड जर्मिनेट होके फ्रूट्स बन जाएंगे, राइट, सीड्स जर्मिनेट होके फ्रूट बन जाएंगे और फिर क्या होगा, जो सेपल्स पेटल्स वो सब चले जाएंगे। गॉट इट। नाउ सी इंटेग्यूमेंट्स, दे विल फॉर्म सीड कोट। इंटेग्यूमेंट्स कहाँ थे, ओव्यूल, ओव्यूल की जो कोटिंग थी देवर इंटेग्यूमेंट्स, राइट, तो वो क्या बन जाएंगे, ओव्यूल की कोट अब सीड कोट बन जाएंगे, सीड कोट, है ना, कितना सिंपल है, ओव्यूल के कोट अब सीड कोट बन जाएंगे। आउटर इंटेग्यूमेंट विल फॉर्म टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट विल फॉर्म टेगमेन, न्यूसेलस इट डीजनरेट्स, न्यूसेलस जो है खत्म हो जाएगा, डीजनरेट यानी खत्म हो जाएगा, अगर है देन इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। देन एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, एम्ब्रियो सैक में 3 चीज़ें थी, एक तो एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई देवर सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड 3 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स दे डीजनरेट। एग सेल इट फॉर्म जाइगोट, एग सेल में क्या होता है, मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग सेल एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, zygote forms embryo, right, egg cell it fuses with the male gamete, it forms zygote and zygote forms embryo. Secondary nucleus, it fuses with the male gamete, there are 2 male gamete, right, one here one here, male gamete it fuses with secondary nucleus, it fuses with the male gamete and it forms endosperm, it provides nourishment. Got it? Post fertilization changes, see what is the difference between ovule and seed. Ovule is a structure contained in ovary, ovary contains ovules, and seed is present in root. Inside the ovule embryo sac is present, it contains female gamete, and seed it develops after fertilization, right, this is female gamete, male gamete will enter and it will form seed after fertilization. It is pre-fertilization, fertilization has not taken place, then there is ovule, after fertilization it forms a seed. I hope कि चलो ठीक है, यहाँ तक आपको फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप अच्छे से स्टडी कर लेना पूरा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।